Morning students of class 7th. I'm your physics teacher Vikas. I hope everyone is safe at home. In continuation to what we were discussing in the last video about your chapter number 2, force and pressure, and we studied various types of motion, and then from motion we moved on to simple pendulum, which somewhat looks like this. And the last time we discussed about that B here shows as a mean position, and these two are extreme position A and C. The definition of simple pendulum as well as mean and extreme position were discussed at the end of the last video. Now today we will be discussing some terms related to the simple pendulum. Now what are those terms? The first one is effective length of the pendulum. Now before I discuss these terms, effective length of the pendulum, then there is amplitude, then there is oscillation, what do we mean by that? And then we have time period of the pendulum and frequency at the end. Let's try and understand from this diagram here. Now, the effective length of the pendulum is described as the distance from the point of suspension. This is the point of suspension to the center of the bob. As I told you last time as well, this bob is made up of some kind of metal. ये अंदर से खाली नहीं होता है, ये पूरा metallic ball है. To center, and this is if you see the shape of this metallic ball, if it's like a sphere. So we take this radius of the sphere and we add to this length of the string and we get effective length of the pendulum. So this is the definition. The distance between the point of suspension and the center of bob in a simple pendulum is called effective length. So this is very important. This you need to remember. This is denoted by lowercase l. Now the second term is amplitude. Let's understand this from the diagram as well. As I told you the last time as well, how this pendulum works is we displace this bob a little and then leave it. This maximum distance or displacement between this mean and extreme position is the amplitude of the simple pendulum. So the maximum distance of the bob of the pendulum from its mean position, you may write to extreme position, is called amplitude. Now the third term is oscillation. When do we say that, let's go back to the diagram again. So when do we say that one oscillation has been made? Okay, let's start from this extreme position A. This ball, if it starts from A, reaches B, and then to the other extreme position C, and then back to B, and then back to A. This is your one oscillation. So this is the definition as well. One complete to and fro motion. To and fro motion means आगे पीछे. एक मीन पोजीशन ऑसिलेटरी मोशन में अगर आपको याद हो, हमने जो किया था कि एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन. मीन पोजीशन इज मस्ट इन ऑसिलेटरी मोशन. So one complete to and fro motion of the bob of a pendulum from one extreme position to other extreme position and then back
to its starting extreme position is called an oscillation. जैसे we start from A, reaches B, then C, then back to B, and then back to A. This is your one complete oscillation. Look in the diagram here. We can start from this extreme position as well, C, then B, then A, then again back to B, then again back to C. एक ऑसिलेशन के लिए दो चीजें जरूरी हैं which you have to keep in mind. First, कि एक ऑसिलेशन में दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस आना जरूरी है. हमने स्टार्ट किया C से, एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, और सेकंड कंडीशन कि हमने जहां से स्टार्ट किया है वापस वहीं पे आना है. तो वी स्टार्ट फ्रॉम C, then move to B, A, B and C back. ऐसा नहीं है कि we cannot start from mean position. We can. mean position के केस में क्या होएगा, आप जैसे B से स्टार्ट किया, फिर आप चले गए A पे, फिर वापस B पे, फिर C पे, फिर वापस B पे. अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि B से हमने स्टार्ट किया, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन A और C आ गई, और एंड में हम वापस B से चले थे, B पे वापस आ गए. सो दिस इज योर वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस एज वेल. अगर हम A से चलते हैं, B पे पहुंचे मीन पोजीशन एंड देन C, दिस इज योर हाफ ऑसिलेशन. ठीक है, ये हाफ ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है कि आपने B से स्टार्ट किया, A पे पहुंचे, फिर वापस B पे. ठीक है. अब ये ऐसा भी हो सकता है कि हम A से स्टार्ट किया और B तक ही पहुंचे. ये क्या होएगी, 1/4 of an oscillation. Let's understand this from the diagram again. Okay, हमारी one oscillation क्या है, A to B, C, B, A. अब इनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला पार्ट, we go from A to B. Second part, B to C, then again C to B, third part, and then B to A, fourth part. So one oscillation can be divided into total 4 parts. Got it? So this is how we get 1/4 of an oscillation. It can be, if we start from C to B, is 1/4 oscillation. If we start from B, we go to A, or we start from B, we go to C. This is 1/4 of an oscillation. Got it? Note it down. It will be handy for you. Okay, let me quickly. Now the next fourth term that we will be studying, and it's very important, is the time period of a pendulum. It is defined as the time taken by a pendulum to complete one oscillation. It is measured in seconds. Its SI unit
of time period is second. So what does it say? It is defined as a time taken by the pendulum to complete one oscillation. एक oscillation कितने seconds में होएगी? That is your time period. Okay? Now moving on, and it is denoted by, इसका symbol जो है वो है capital. Next in line we have is frequency. It is defined as number of oscillations completed in 1 second. एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई? एक सेकंड में जो एक पेंडुलम है, it can complete more than one oscillation as well. It can also complete less than one oscillation. It can also complete equal to one oscillation. So how many oscillations it did in 1 second? That is the frequency. It is denoted by small f, and SI unit of frequency is equal to Hertz or per second. This is called per second. S raised to the power -1. So these are the terms which are related to simple pendulum. Now there is a relationship between the time period of a pendulum and the frequency, and this is as T is equal to 1 over F. They are reciprocal to each other. Now let's see by an example how we can do that. Let's take an example. Suppose you clap 20 times in 5 seconds. ठीक है? तो आप 5 seconds में आप 20 times clap कर पाते हो, you know? तो 5 seconds में आपने 20 times clap कर दिया. अब अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड T, क्योंकि ये क्या है? अगर आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन में देखें, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो इसमें जो है टाइम टेकन न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है? एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा? 5 over 20, 1 by 4. Clear है? Okay, let me just quickly get this one. And let's do the calculation for frequency now. Frequency अगर calculate करनी है, तो let's have a look at this definition. Number of oscillations completed in 1 second. तो number of oscillations पहले है, ये न्यूमरेटर में आएगा. Divided by time taken.
कितनी है ऑसिलेशन 20, टाइम टेकन 5 सेकंड नीचे, तो ये 4 आ गया क्योंकि सेकंड नीचे था, हम इसको एक्सपोनेंट में ऊपर लेंगे 4 से 4 पर सेकंड और हार्स, या आप सिंपली इसको HZ, small h small z, sorry, when it comes to symbol this is capital H and lowercase z. Now if you see value of frequency f is 4 and the time period is 1/4, they are reciprocal to each other, so hence proved. This is the relation between time period and frequency. Okay, now these were the terms that we studied related to simple pendulum. Now let's also study the factors on which the time period depends. कोई ऐसे factors हैं जिनमें time period कम या ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है. So these are factors on which time period t depends. तो उसमें फर्स्ट नंबर जो आता है इफेक्टिव लेंथ. टाइम पीरियड t is directly proportional to square root of effective length. इसको हम ऐसे लिखते हैं. It is directly proportional to square root of f. अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा. क्लियर है? नाउ सेकंड फैक्टर, time period is inversely proportional to acceleration due to gravity. इसको हम वेट में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट एक दो वीडियोस में आएगा टॉपिक मास एंड वेट, तब हम इसको पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है. इसको हम स्मॉल g से लिखते हैं. इसकी सरफेस ऑफ अर्थ पे ये वैल्यू है. इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आगे हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है? T is inversely proportional. Inversely proportional का मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. Now if we combine these two factors, जैसे मैथ्स में लिखते हैं 1 and 2, combining 1 and 2 we get, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है टाइम पीरियड निकालने का पेंडुलम का. आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आप किसी भी टाइप के पेंडुलम की टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. और टाइम पीरियड पता है तो हम लेंथ निकाल सकते हैं ऐसे. ओके, नाउ आर देयर एनी फैक्टर्स ऑन व्हिच टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड? लेट्स सी दैट. There are two factors on which time period does not depend, and those two factors are mass and material of the bulb. अगर बॉब आप आयरन का बना लेंगे या लेड का बना या गोल्ड का बना, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That you would have to remember. So it does not depend upon mass or material of the bulb.
And second, there is another factor on which it does not depend, that is amplitude of the bob. But there is a condition that the amplitude should be small, meaning this displacement from B to A should not be large, it should be small. इसको ऐसे नहीं कि हम B को उठा के ऐसे वो ले जाएं, नहीं, ठीक है? The only condition is, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, does not depend. Factors on the does not depend. On mass or material of the ball. और second है amplitude, it does not depend upon amplitude if it is small. ये condition, ठीक है? इसमें आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंडुलम है जो हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है. इसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम, तो इसकी डेफिनेशन, अ सिंपल पेंडुलम whose time period is equal to 2 seconds. Seconds pendulum whose time period is equal to 2 seconds. ठीक है? It has approximately, जो सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसकी इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर होती है. इट हैज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ऑफ इफेक्टिव लेंथ. ठीक है? सो विद दैट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. मीनवाइल दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है? नेक्स्ट हम move करेंगे and we will talk about some certain quantities which are called scalar quantity and vector quantity. Now let's see the definition, then I'll try and explain it to you. This is a new thing you must have studied in class 6 that we define. This is scalar and vector, but not much information was given to you. Now let's see what information we can give you this time. Now in scalar quantity, the physical quantity which can be described using a numerical value alone. यहाँ पे आप alone लिख लीजिए, यहाँ पे करो. न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने खास नाम फिजिक्स में देते हैं, हम उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं. दैट इज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस है. दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, the physical quantity which need both numerical value, magnitude, as well as direction to describe it. That is vector quantity. Let's try and understand. Okay, आप ऐसे लिख चलो. There is an example. आप ऐसे चलो कि आपके घर में किसी को आना है, वो आपको कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके घर के पास पहुंच गए, हम आपके घर के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर दूर होंगे. तो
आप उनसे पूछते हो, क्या पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि आप 100-200 मीटर हो, पर आप उनसे क्या पूछोगे साथ? अगर आप उनको ढूंढने जाएंगे, लेट्स सी एन एग्जांपल, दिस इज योर हाउस, ठीक है, ड्राइंग से ऐसी है, एंड आप घर के बाहर ऐसे पैसेज में यहाँ पे ऐसे खड़े हो, ठीक है। Now there is one person who says that I am 5 meters away from you. Would you be able to find that person? आप क्या उस पर्सन को ढूंढ पाओगे? आपको पता चल जाएगा किस तरफ है? वो हो सकता है कि 5 मीटर इधर होए, इधर होए, इधर होए, हो सकता है इधर होए। Possible? Yes. So that is the reason we ask the person कि आप किस साइड से आ रहे हो? क्या आप हमारे घर के आगे सामने की तरफ से आ रहे हैं, या हमारे घर के पीछे की तरफ से आ रहे हो, या किस साइड से आ रहे हो, या किस तरफ हो? Isn't it? तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसी चीजों में हमें वेक्टर क्वांटिटीज आती है। Let me give you another example. We use petrol in our cars. अब कितना पेट्रोल यूज हुआ है, खर्च हुआ है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को, अपनी गाड़ी को किस तरफ लेके जा रहे हो। आप यहां से यहां गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर आ गए, और फिर वापस घर पे आ गए। पेट्रोल यूज होएगा? डेफिनेटली होएगा। आप गाड़ी को ये तो नहीं कह सकते पेट्रोल क्यों यूज हुआ, मैं तो घर से चला था, घर पे ही वापस आ गया। दैट मेक्स नो डिफरेंस टू इट, ठीक है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमें बनानी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब पेट्रोल कितना यूज होएगा वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस घूम के आए हो गाड़ी में। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से चले थे और वापस कहां पे आ गए। समझ रहे हो? या आप किस डायरेक्शन में गए थे, क्या आप इस डायरेक्शन में गए थे, डजंट मैटर, पेट्रोल तो यूज होएगा ही होएगा। सो that is the reason we need scalar quantity as well as vector quantity, ठीक है। let's try and understand it more, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपको याद करनी है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट भी है। द फिजिकल क्वांटिटी which can be described using numerical value, magnitude alone is called scalar quantity. The physical quantity which needs both numerical value as well as magnitude as well as direction to describe it is they are called vector quantity. Okay. Scalar quantities are always positive. However, the vector quantities, they can be 0, negative, or it can be positive as well. Okay, let's try and understand by another example. Now, number line you all know. This is the number line. But here, what we will do is, this is your starting point. ये आपका घर है। ठीक है, इसको हम 0 देते हैं, आप इसको 0, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मान लो। ठीक है, ये आपका स्कूल है, यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। आपको घर से स्कूल जाना है, तो व्हाट वी डू इज, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है वो हम पॉजिटिव देते हैं। तो इस तरफ जो मार्किंग होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपका स्कूल 5, मतलब 5 किलोमीटर चल के आपका गाड़ी में, वैन में आप स्कूल पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आप यहां से
इस डायरेक्शन में गए। ठीक है, अब हम आपसे मैं पूछूं कि आप कितना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना अपना पेट्रोल यूज हो गया, कितने अपने टायर जो है गाड़ी के वो वेयर टेयर हो गया उनका, या वो घिस गए, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर, जितना 5 किलोमीटर गया, है ना। अब अगर मुझे स्कूल जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, और पर मैं इस तरफ चला जाऊं तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये रिवर्स की डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन है। दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन। इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। दीज वैल्यूज आर टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम let's keep on this example. So instead of going in this direction, you are going in this direction. तो अगर आप यहां पे पहुंच गए, अब आपको स्कूल जाना है, तो पहले तो इतना डिस्टेंस कवर करना था, अब कितना करना पड़ेगा? इतना बढ़ गया ना। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी जगह पहुंचना है तो उसमें डायरेक्शन चाहिए। अब हमें रोड्स बनानी है, तो रोड्स बनाते टाइम हमें क्या करना पड़ता है? रोड्स बनाते टाइम हम यही कोशिश करते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव टू गो टू लुधियाना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रेट रोड पकड़ेंगे, मोगा से लुधियाना जो जा रही है। क्या हम ऐसा करेंगे कि मोगा से पहले जालंधर चले जाएं, जालंधर से लुधियाना जाएं? नहीं करेंगे, वो लंबा डिस्टेंस पड़ेगा। ठीक है, सो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो ये चीजें हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाइए। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव, एंड इफ यू आर गोइंग इन द